It is visible to all. Is it Yes, visible sir. to all? Okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So, so this is the basic, the foundation of that information business system. So we have just check this framework. That the framework will be decided that information system will be present here, and that most efficient part is the challenges. What are the challenges? That challenge is depending upon needs. What are the needs? Business needs. What is the requirement? And the base of this requirement, you have specified their feasibility. That feasibility means their technical feasibility or any environmental feasibility. The number of feasibility will be points will be occur that feasibility on the depend upon that feasibility you have decided that your business needs, and they apart that process design and maintenance testing, the lots of challenges we faced in that information system. And when I'm going from this side business application, that business application also one of the most important part is that business application and their information technology. In that case, the business application, that means suppose we are using MS Office. Suppose we are using MS Office. Why I am using this MS Office? We are preparing some documents. We are preparing some slide presentation. We are preparing going for the Excel or data sheet. We are also preparing our database like MS Access, and also we are using some picturing tools. Microsoft picturing tools also I am using that. Okay, there is a number of application also present. But what is the information? What is the system? That system is that MS Office, Microsoft Office. And that Microsoft Office contain number of application. And what is the technology behind them? The technology behind them, your operating system. Your operating system. That operating system that maybe Windows, Linux is not possible because Linux is not supported the MS Office. It maybe it will be using as open for oracles. Oracle database it will be using that for MS Word. लाइक जैसे ओरेकल में आप लोग सॉरी एमएस ऑफिस में आप लोग जैसे यूज करते हैं वर्ड एक्सेल पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड लाइनक्स में आप लोग ओरेकल का बेस में यूज करेंगे. Fine. This is the technology. Technology is your operating system. That operating system may be Windows 98, maybe 2000, maybe XP, Pack 1, Pack 2, Pack 3. Then your Windows Vista. It is outdated. Windows 7, Windows 7 that professional, ultimate, Windows 8, 8.1, 10. Now will be 10. Maybe after that will become as Windows 13 also. 11, 12, 14, more. Fine. According to their compatibility, you have to be downloaded for MS Office. Like your 8, Windows 8.1, then your compatibility MS Office, maybe Windows or Microsoft 2018, maybe 13, depend upon that. Or we know that MS 0 2007, Microsoft Office 2007, it is compatible to all the operating system. That is the compatibility, all the operating system. So on the basis of this business application and according to their information technology, we have used that information. Then system. Information means your data, your resource. System means executable process. Okay, their executable process and their corresponding data we are make together to development process. This is the third part. This thing is the development process. So basically, what is my point is behind them? The information system. First point is data, resource, and get together to your processing. This is your foundational concept. And my starting point, I am saying that management challenge. I am just told to all of you, but that is the bottom to top. Now I am coming top to bottom. Both the words. We are thinking first what are the challenges. Suppose I am taking any project, suppose like your food online food system. So first I am think that what are the challenges behind them.
प्रीवियस में क्या हो रहा है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से मैं क्या डेटा कलेक्शन करूंगा और मैं क्या रेक्टिफाई करूंगा अपने फूड ऑनलाइन सिस्टम में। अगर थियोरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से जाएं तो फर्स्ट हमारा रहता है फाउंडेशन कंसेप्ट। हम लोग को क्या क्या डेटा चाहिए, उस डेटा के बेस में हम लोग क्या डिजाइन करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर लेंगे, कौन से हार्डवेयर लेंगे, क्या हमको कंपैटिबिलिटी क्या फेस करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। दिस इज द जनरलाइजेशन theoretical concept, but practically when in the field this is just a reverse one. Okay, so first thing, the information system, that is the foundational concept. After the foundation concept will be developed, we are going for the development process. After the development process is completed, as usual, the business application and information technique, both the point will be together, will be taking the together, and we are facing number of challenges. That challenges will be management challenges. What are the management challenges? I'm just going to last slide. That is the management challenges. It is visible to all management challenges. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. this is the management challenges. What are the management challenges? That all the strategic process, business strategical process, need, human resource development, infrastructure performance, everything is there. Your whole organization structure, from your take to lower employee to higher up to employee. दैट मीन्स योर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर आपका टीएल को एम्प्लॉय रहते हैं, को एम्प्लॉय के बाद टीएल रहते हैं, टीएल के ऊपर क्यूटीएल रहते हैं, क्यूटीएल के ऊपर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर के उसके मैनेजर। दैट इज द प्रोसेस, that is the management challenges of your e-business enterprisation system or any information. So e-business means your online system. Basically your e-business will be divided into the business to business, business to customer, and that is the two things, B2B and B2C. हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस क्या चेंजेस कर सकते हैं और कस्टमर के ओरिएंटेड से क्या चेंजेस कर सकते हैं, फोकसिंग कर सकते हैं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. So we are moving from first is the information system, this one the second one. Now comes to what is the system. Now the system that they have a fixed some area of boundary. That means आप लोगों को कोई क्वेश्चन देता हूं अगर, just to find out the largest number, I'm just asking to all of you, what is the largest number? We do not know because there is a no end. हम लोगों को पता ही नहीं होता लार्जेस्ट नंबर कौन सा है नेचुरल में. If I am restricted 100, then your answer will be with 100 below, then 99, sir. 1000, this is the 9, sir, 999, sir. But I am extend that 1 billion, then somehow it will be difficult to write. If I am more difficult to then just find out the largest number. But sir, it is unbounded things. So every system have a boundary structure. Every system have a boundary structure. That is the system boundary structure, and we are having that environmental feasibility study. Environmental feasibility study. It's must needed. They have some other factor also depend on the environmental factor. We have decided our system boundary. That mainly it will be depend upon their your raw material manufacturing process, controlling what are the manufacturing process, it will control by your management, and that is the output with the finishing product. Simple one, input, manufacturing process, your desired outputs. If I am finding my desired output, then my product is one, better one, best one, optimum one. If I am not finding the desired output, so I am trying to, it will be rectified day by day, time to time. It's going on. Okay, so my question is same thing, that it is depend upon the system boundary, your system will be work. System within the system boundary, I work my system and collect the information also. And that is the finding up on the control. You were just worried about that. It is a control signal, feedback signal. This is just a point. This is a control signal. This is a feedback point. Because obviously, हम लोग जब भी raw material use करेंगे ना,
जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहेगा कुछ तो उसमें फीडबैक आएगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर। आपका दो फैक्टर वही होता है, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उस रॉ मटेरियल का कितना कंसिस्टेंसी है और कितना कंप्लीटनेस रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो दो फैक्टर को डिपेंड करता है। इसलिए आप लोगों के पास फीडबैक सिग्नल रहेगा, आप कुछ भी फीडबैक आपका रहेगा, यस और नो, फाइन। उस तरह से आपका डिजायर आउटपुट केसेस में क्या रहेगा, टेस्टिंग प्रोसेस, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस। टेस्टिंग में आप लोग कुछ भी टेस्टिंग प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। देयर हैव अ नंबर ऑफ मेजर थ्री टेस्टिंग प्रोसेस, दैट इज द यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दैट इज द three important things, testing cases of any product by any software product by any business online products. And also the maintenance cases also having three different parts, that is will be additive, perfective. These are the two things will be most important things for their maintenance cases। आपका सिस्टम कितना एडप्ट कर रहा है आपके एनवायरनमेंट को और कितना परफेक्टनेस दे रहा है आपके प्रोडक्ट को, फाइन। दिस इज योर सिस्टम ऑफ द, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ डिफाइन इन दिस वे। वी आर मूविंग फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द इंफॉर्मेशन स्लाइड। नाउ आई एम कोलैबोरेटिंग विद इंफॉर्मेशन, the simple that way. One is the input data, they have some processing. On the basis of processing, the control system performance will be occur, and also the storage data also. Those are the permanent data and storage permanently, and we are getting some desired out. From this onward, any doubts? Any doubts? Sir, Yes. the slide is number 14. It is stock at number 14 actually. We cannot see on the other slide. Maybe it will be to 4. In my point is the slide number 4, I think. Now it will be 4. Yes, sir. Yes, sir. Now it Okay. is okay. Actually, I'm make it zoom, so it would be 14th. Okay. Sorry. Now it's fourth, slide number 4. Yes, sir. Okay. So basically, we are studying about that. We are getting some information data, academic we are processing, and getting some outputs. That's all. I am moving from next slide. What are the component of information system? What are the components? That components basically we are developed that as component. We are dividing number of things. What the things we're dividing that? That is the input data. From I accept that input data. Input data में क्या क्या difference हो सकता है? Only one thing difference होगा, ये आपका रहेगा data resource के ऊपर, data and knowledge based system के ऊपर। आप क्या डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, वो कौन से बेसिस पे, कौन से नॉलेज के बेसिस पे आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। Suppose I had some I'm just talking about that e-real system portal. I'm just develop e-real system, real estate, sorry, real estate portal I am develop it. तो मेरे लिए पहला डेटा क्या होगा, इनपुट डेटा। आई एम कलेक्टिंग, क्या करेंगे हम डेटा, हम किस जगह को बेचने के लिए रख सकते हैं, किस जगह को हम रेंट में भी दे सकते हैं। दो पर्पस में रखेंगे, परचेस के लिए और एक रेंट के लिए। ये मेरा बेसिक डेटा रहेगा। Okay, so on the basis of that data resource, that will be according to your knowledge based system, that we have to be collect our input data। आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसके बाद कलेक्ट करने के बाद क्या चेक करेंगे, उसका कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस चेक करेंगे, उसका फिजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, टेक्निकली कितना स्ट्रांग है और एनवायरमेंटिकली कितना स्ट्रांग है, फिजिकली कितना स्ट्रांग। ये पॉसिबल हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है। ये मेरे डेटा बिजनेस के लिए ये मेरा फायदेमंद के लिए है कि ये मेरा फायदेमंद के लिए नहीं है। We are just going for the analytical structure. We are having that some analytical way to analysis our data resource or data inputs to before going for the processing। ओके तो ये आपका चला गया डेटा रिसोर्स अंडर दिस इंफॉर्मेशन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ओके तो अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा राइज, how which type of people that analysis that particular this input data। हम लोग कौन से बंदे होते हैं जो हमारे ई बिजनेस सिस्टम में, और कौन से पर्सन होते हैं इस ई बिजनेस सिस्टम में, ये आपको एनालिसिस करते हैं। दैट इज योर पीपल रिसोर्स मैनेजमेंट।
ये आपका कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पर्सन रह सकता है या एंड यूजर रह सकता है। तो बेसिकली ये आपका सिस्टम स्पेशलाइजेशन पर्सन रहते हैं, जो आपके मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, टीएल रहते हैं, क्यूटीएल रहते हैं, ये एनालिसिस करते हैं। मैं इन लोगों को चार डिवाइड से डिवाइड करता हूं, दैट इज द 4P प्रोसेस। और आपके ई बिजनेस सिस्टम में मोस्ट ऑफ द थिंग इज दैट 4P प्रोसेस। पी पी दैट 4P मतलब फर्स्ट P स्टैंड फॉर पीपल, second P stand for project, third P stand for product, fourth P is last one, that is the P will be stand people, project and product, and last one is that uh, person, people हो गया, project and your product. I'm sorry, I forget about last one. People, project. प्राइस होगा। नहीं सर, नहीं नहीं, प्राइस नहीं होता है वो यहाँ पे। प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपका कोई भी प्रोसेस ई बिजनेस का सिस्टम। ये आपका डिपेंड करता है पीपल के ऊपर। प्रोजेक्ट रहता है आपका, प्रोजेक्ट के बाद प्रोडक्ट एंड आपका प्रोसेस, प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस। थैंक थिंग बिजनेस प्रोसेस, आई एम फॉरगेट अबाउट दैट, नॉट प्राइस, दैट इज अ बिजनेस प्रोसेस। ओके, ये आपके चार हिस्सों में डिवाइड करेगा। आपका कौन से बंदे रहते हैं, पीपल रहते हैं, ये आपका मैनेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ये आपका प्रोसेस डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट और एनी प्रोजेक्ट। फाइन। So on the basis of that, before processing, that people will be resource will be specialized, people will be decided that your input data resource. After that, that the input data resource will be defined. The define, we are going for this processing system. वो प्रोसेसिंग सिस्टम में आपका दो हिस्से में डिवाइड रखते हैं हम, सॉफ्टवेयर रिसोर्स के लिए, एक हार्डवेयर रिसोर्स के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेटवर्क रिसोर्स। आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोग प्रोग्राम का प्रोसीजर कोई मेंटेन कर सकते हैं। जैसे लोग हम लोग यूज करते हैं कोई भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट का, हम यूज लोग दो हैंड में डिवाइड करते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अगर मेरा फ्रंट एंड मेरे जावा यूज करते हैं, तो बैक एंड में हम डेटाबेस यूज करते हैं माई एसक्यूएल। अगर डॉट नेट यूज करते हैं तो एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं बैक एंड में। ये these are the your software, basic software will be used. Otherwise we are using any tools like your use case point tools method to calculate your software project, like your on the basis of functional point, ये भी एक हो सकता है। नहीं तो any database tools we can use that, no problem. Somehow it will be using as also use case diagram, that is the based on UML software, unified modeling language. These the tools or software we are using for that, design the structure or develop the processes the structure. Okay, and there's a some resource that will be software resource and hardware resource. हार्डवेयर रिसोर्स के लिए आपको मशीन एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं प्रिंटर, अगर हम लोगों को प्रिंट चाहिए एक पेपर, हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं। प्रिंटर इज द utility software, both software and hardware combined. Okay, and then another one is the network resource, is the communication media and network support. Obviously आपका नेटवर्क रिसोर्स में आपका तीन हिस्से में रहता है, लैन वैन कनेक्शन, मैन कनेक्शन, लोकल एरिया, वाइड एरिया, मिडिल एरिया नेटवर्क। तीनों हिस्से में डिवाइड होते हैं। वो कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। The generalization, your software component of information system, these are the component: data resource, people resource management, software resource, hardware resource, and network resource. This is the data versus information. आपको लोग का डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है? आपको कोई बता सकते हैं मुझे डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है? एनीवन? So data is a raw material. So हाँ, if it is डेटा। processed, if it हाँ, is processed, it will be information. ओके। सपोज मैं एक डेटा आप लोग को देता हूँ, हमें एम्प्लॉय डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। एम्प्लॉय डेटाबेस में हम दो चीज मेंटेन कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी मेंटेन कर रहे हैं और एम्प्लॉय नेम मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डेटा कौन सा है, इंफॉर्मेशन कौन सा है? यस Name is a data, sir, and Sir, ID number is is the a data, data. collectively called information. ID and name are separately their data. Collection of data is information. रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, हम कलेक्शन पर्टिकुलर आईडी और पर्टिकुलर नेम।
Okay, Got so it, that is doctor. the data and information, the difference between both the data and information. So no need for any discussion about this point. तो नेक्स्ट विल बी एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या क्या एट्रीब्यूट रहना चाहिए आपका पर्पस इंफॉर्मेशन के क्वालिटी के लिए. तो यह तीन चीज़ें में डिवाइड किया जाता है, एक टाइम में, एक कंटेंट में, एक फॉर्म में. अगर फॉर्म के हिसाब से मैं डिवाइड करता हूँ, उसमें क्लैरिटी रहना चाहिए, ऑल द डिटेल्स रहना चाहिए, उसका ऑर्डर, प्रेजेंटेशन, मीडिया, लाइक योर एम्प्लॉय डिटेल्स. एम्प्लॉय डिटेल्स में मेरा फर्स्ट रहेगा एम्प्लॉय आईडी, जो आपको प्राइमरी की को डिफाइन करता है डेटाबेस में, क्योंकि यूनिक आईडी हर एम्प्लॉय को दिया जाता है. नेम्स किसी का भी सेम हो सकता है, सैलरी भी किसी का सेम हो सकता है, पोजीशन भी किसी का सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है, बट आईडी इज डिफरेंट वन. दैट्स व्हाट इज अ यूनिक. तो इट विल बी मेंटेन द क्लैरिटी. ओके, अगर डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो, और डिटेल्स दैट मीन्स हैव कंसीडर नेम, एड्रेस, उसका सैलरी, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग अपडेट, these are the details we have to collect it. Order, presentation, media, they have also some part of form. And content also accuracy. Accuracy, relevance, completeness, consistency. मैं बताया था आप लोग को. तो consistency और completeness दोनों पॉइंट होता है आपका रिक्वायरमेंट रॉ डाटा का. उसी के ऊपर everything you have to be details, you have to analysis that. टाइमलाइन में भी रहेगा. टाइमलाइन में मतलब क्या रहेगा, आपको 15 दिनों में कोई प्रोजेक्ट खत्म करने का देता, दिस इज योर टाइमलाइन, that is your boundary structure. Okay, these are the main focusing on the attribute of information quality. This is the major roles. रोल्स में हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगा. सपोर्टिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज द डिसीजन सपोर्ट स्ट्रैटेजी सिस्टम. डिसीजन मेकर, आप लोगों के डिसीजन कौन ले सकता है, दैट इज अपर लेयर मैनेजमेंट सिस्टम. आइदर योर मैनेजर हो सकते हैं, आपका असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, अदरवाइज आपका टीम लीडर हो सकता है, अदरवाइज आपका क्वालिटी टीम मैनेजर हो सकता है, कोई भी जो भी आपका हेड होगा. उसके बाद क्या रहेगा, सपोर्ट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. जो लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनको डिसीजन को बेस करके आपका प्रोडक्ट एनालिसिस कर. और लास्ट में आपका रहेगा सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. सपोर्ट ऑफ द बिजनेस. बेस्ट एग्जांपल इज नाउ द प्रोडक्ट अमेजन. अमेजन अभी नंबर 1 पोजीशन में क्यों है, उसका हर लेवल के अंदर, हर लेवल के ऊपर डिसीजन सपोर्ट मैनेजिंग, आपका जो भी डिसीजन मेकिंग रहता है वो वहां पे बेस्ट है, इसलिए नंबर 1 पे है. उसके बाद फ्लिपकार्ट आ सकता है, उसके बाद मीशो आ सकता है, उसके बाद स्नैपडील आ सकता है. दीज आर द ऑनलाइन ई बिजनेस सिस्टम. तो आपके हर लेयर में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के हर लेयर में तीन चीज तो रहेगा. जो रहेगा आपका मेन सिस्टम रहेगा बिजनेस सपोर्ट के लिए कौन कौन रहता है, दैट इज द बॉटम 1. उसके ऊपर टॉप 1, दैट इज द सपोर्ट मैनेजर डिसीजन मेकिंग. एंड ओवर ओवर दैट इज द स्टैटिस्टिकल एडमिन, जो आपका हेड सपोर्ट रहता है. वो एडवांटेज दे सकते हैं आपका प्रोडक्ट को कितना एनालिसिस करना, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है. सेकेंड थिंग, इट इज द हिस्ट्री ऑफ रोल मॉडल्स. दिस इज जस्ट एनालिटिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम 1950 टू 2000. पहले 1950 एंड 60 में हम लोग डेटा प्रोसेसिंग में जाते थे. जैसे आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, दैट इज द टीपीएस. अभी भी टीपीएस है आपका, चल रहा है, वो ऑनलाइन हो चुका है. अलग अलग बात है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल डेटा वहाँ पे इतना हाई प्रोसेसिंग नहीं किया था तो उस टाइम में, तो वो वहाँ पे बस डेटा प्रोसेसिंग हम के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिकल डेटा और प्रोसेसिंग व ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ले रहे थे. जैसे पहले केसेस में बैंक में हम लोगों का जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा था वो पेन एंड पेपर मोड में ही हो रहा था. अभी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के भी आप कर सकते हो. Day by day it will be changes, that is the information and the consistency system, it will be developed one by one. 1960 में आप लोगों का आ गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेजेस कैसे किया जाएगा. उसके बाद डेवलप हुआ आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. उसके बाद डेवलप हुआ आपका एंड यूजर कंप्यूटिंग सिस्टम, जो आपका स्ट्रेटेजिकल एंड यूजर में डिफाइन करता है. अभी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का डेवलप हो रहा है डे बाय डे, तो आपका ई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वहां से. हम 1990 से 2000 से आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, ई बिजनेस ऑनलाइन सिस्टम आ गया. दिस इज द ई बिजनेस का इंटर नेटवर्क बिजनेस सिस्टम.
Basically, I'm just to all of you. This is the engineering research product, and then some manufacturing the production, their accounting and financial management system. Under depend upon this manufacturing production system, we are defined that advertisement, sales, customer service, and that sales and customer service will depend upon this consumer business customer जो हमें पहले मैं बताया था आपका B2C. Fine. So on the basis of that manufacturing product system, that is the supply and other business, that is the B2B. वहां पे आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, लॉजिस्टिक रहेगा एंड एनी प्रोसीजरमेंट रहेगा. फाइन. तो ये आप लोगों का क्या है स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में हम लोग को डिफाइन किया जाता है आप लोगों का बाउंड्री लेवल कितना है बिजनेस प्रोसेस सिस्टम में. हर किसी का बाउंड्री लेवल रहता है. तो यहाँ पे आप लोगों का बाउंड्री लेवल इस तरह से डिफाइन किया गया है, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. दैट मीन्स हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में भी बेटर हो सकता है, वो ठीक तरीके से भी काम करता है, बट वहां पे आप लोगों का सेल्स कितना हो रहा है और कस्टमर सर्विस आप लोगों को कितना दे रहे हो. एडवर्टाइजमेंट इज मे बी इज वन पार्ट ऑफ दैट, नो प्रॉब्लम, बट सेल्स एंड कस्टमर सर्विस वो दोनों के ऊपर मेनली डिपेंड करेगा. तभी आपका प्रोडक्ट ई बिजनेस का जो भी आपका सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा चलेगा. मतलब मार्केट में जैसे आप पकड़ लो ई रियल स्टेट पोर्टल नंबर ऑफ प्रेजेंट, ऑनलाइन फूड सर्विसेज बिफोर भी प्रेजेंट था, बट अभी क्यों जोमेटो और स्विगी में ज्यादा चल रहा है. ऑफर के लिए नहीं चलता है, कंपैटिबिलिटी ज्यादा इसलिए चलता है. क्यों लोग अमेजन से ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट से थोड़ा कम क्यों है. उसके बाद स्नैपडील और मेशो में क्यों ओनली फैशनेबल प्रोडक्ट भेजा जाता है. दीज आर द डिफरेंस to Amazon to Flipkart, Flipkart to Meesho or any Snapdeal's product. These are the difference. अभी Amazon को फॉलो करके सभी ऐड कर रहे हैं, जैसे फैशनेबल प्रोडक्ट, ग्लोसरी प्रोडक्ट, दीज आर द फॉलो. फ्लिपकार्ट पे उसी तरह से चल रहा है क्योंकि मार्केटिंग कंपटीशन चल रहा है, इसलिए डे बाय डे इट विल बी चेंजेस. दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम एंड प्रोसीजरमेंट. सो इसको दो हिस्से में हम रखेंगे. तो वन इज द B2B, अनदर इज द B2C, दैट इज द बिजनेस टू बिजनेस ओरिएंटेड एंड कंज्यूमर टू बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस टू कंज्यूमर ओरिएंटेड. Specifically, your information system divided in two types. One is the operational system, another is the management system. ऑपरेशनल सिस्टम के लिए कौन कौन हिस्से में रहेगा. एक कंट्रोल सिस्टम रहेगा आपका, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम. दूसरा आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रहेगा. और एक आपका रहेगा इंटरप्राइज कोलाब्रेशन सिस्टम, जो आपका ईआरपी होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ईआरपी प्रोडक्ट. फाइन. वह ई कॉमर्स प्रोडक्ट होता है आप लोग. तो मैनेजमेंट केसेस में कौन रहेगा. इंफॉर्मेशन को जो भी मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, मैनेज करेंगे एंड डिसीजन लेंगे. तो दो हिस्से में आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइड होता है बेसिकली. ऑपरेशनल सिस्टम में 3 केसेस रहेगा, मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट के लिए ये 3 केसेस रहेगा. Next, that will be other category. We study after that, but next chapter also having that. That is the export system, knowledge management system, functional business system, statistical information system, and cross-functional system. एक एक करके हम पढ़ेंगे उसके बाद. Fine. तो अभी के लिए just ये this is the category. Basically, before having the 2 category, that is the operational support system and management system. And after that, this is the other category, that is the export, knowledge, functional, strategic, and cross-functional system. Is the last one. This is the development process, how it will be developed, their process. First you have to be define that investigate means requirement specification and analysis. On the basis of consistency and completeness and feasibility study, we have go for the investigate all the raw materials. After that, analyzing product is to define their technically or feasibility study, if will the raw material will be benefit our process system, information system or not.
If will be benefit, then I am taking. On the basis of this raw material, we are going for this design system. डिजाइन आपका दो हिस्से में रहता है, एक आर्किटेक्चरल डिजाइन रहेगा, वन इज आर्किटेक्चर, नेक्स्ट इज हाई लेवल डिजाइन व डिटेल लेवल डिजाइन. आर्किटेक्चर डिजाइन में आप लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट, कोई भी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं. और हाई लेवल एंड डिटेल डिजाइन में आपका रहेगा डेटा फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम एंड योर यूज केस डायग्राम, जो आपका डिजाइन स्ट्रक्चर को पूरी तरह से, आपका प्रोसेस सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम को पूरी तरह से डिफाइन करेगा. फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल बी डिफाइन एवरीथिंग. And after that you go for the implement means your testing process. You have to go for each and every cases, you have going for the testing. यूनिट वाइज टेस्टिंग कर सकते हो, मॉडुलाइज वाइज टेस्टिंग कर सकते हो. उसके बाद अब इंटीग्रेट करके भी उसको टेस्टिंग कर सकते हो. इंटीग्रेट मतलब एक मॉड्यूल के साथ दूसरे मॉड्यूल को टेस्टिंग करते हो. जैसे आप लोग कोई भी वेब पोर्टल को हाइपरलिंक करते हो एक पेजेस के साथ दूसरे पेजेस को. दिस इज द इंटीग्रेटेड वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल गोइंग फॉर यूर टेस्टिंग द प्रोसेस. एंड फाइनली आप लोगों का सिस्टम प्रोसेसिंग, सिस्टम टेस्टिंग रहेगा. भाई 3 केसेस में आपको टेस्टिंग प्रोसेस रहेगा. टेस्टिंग प्रोसेस में आपका केस डिफाइन होने के बाद यू गोइंग फॉर दैट मेंटेनेंस प्रोसेस, दैट इज द रिलीजिंग प्रोडक्ट सिस्टम, मेंटेनेंस सिस्टम. If you have any error, then you are again investigate, again analyze, again design, again implement, again go for maintenance. Again you have a finding error, again we are going for the this 5 process, 1 2 3 4 5. This is the development of your information system. Okay, anybody have any doubts or regarding this part? Hello. Sir, please explain the implementation. Implement. Yes, sir. हाँ, इम्प्लीमेंट पार्ट इज योर, इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप लोग. जब भी आप कोई भी इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे आप एक मान लो आप कोई एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, HTML में फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, तो आप लोग HTML फॉर्म डिजाइन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक फुल नेम रख रहे हो किसी कैंडिडेट का फुल नेम, दैट इज विल बी टेक्स्ट एरिया. आप उसको रेस्ट्रिक्टेड अगर कर रहे हो, जो 30 कैरेक्टर्स और 35 कैरेक्टर्स के 40 कैरेक्टर्स में रेस्ट्रिक्शन कर रहे हो, तो आप उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाओगे. अगर रेस्ट्रिक्शन आपको डिजाइन में रख रहे हो तो वो आपको स्पेसिफाइड होना चाहिए. मतलब मैं जब भी किसी कैरेक्टर बंदे का नाम लिखूंगा, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट, दैट विल बी नॉट एक्सीड एज ए 35 कैरेक्टर्स. दैट इज द इम्प्लीमेंट पार्ट. मतलब मैं अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ फर्स्ट नेम को, कैंडिडेट नेम को अगर 35 कैरेक्टर में रेस्ट्रिक्शन करने के लिए, तो वो 35 में रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए. Okay, sir. Okay, sir. जैसे आप लोग मान लो जीमेल अकाउंट ओपन कर रहे हो, जीमेल अकाउंट ओपन कर रहे हो, आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, यस और नो? Yes, sir. यूजर नेम पासवर्ड देते हो कि नहीं? अभी क्या Yes, sir. करें, Yes, sir. जीमेल अकाउंट में लास्ट में आप चेक करोगे शो द पासवर्ड, एक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स. Yes, sir. हाँ, वो पहले केसेस में नहीं था, अभी के केसेस में आ रहा है. Okay, sir. जैसे आप चले जाओ 10 इयर्स बैक, 10 इयर्स बैक और 15 इयर्स बैक, तो वहां पे जीमेल अकाउंट में आपका वो शो वाला कंडीशन नहीं था, जो शो योर पासवर्ड. Yes, sir. अगर मैं वहां पे क्लिक करता हूं तो वो आपका पासवर्ड मुझे विजिबल होना चाहिए. दैट इज द इम्प्लीमेंट प्रोसेस. Okay, sir. अगर मैं टिक करूंगा वो मुझे पासवर्ड शो नहीं करेगा, तो वो करेक्टली टेस्ट केसेस डिफाइन नहीं हुआ है. Yes, sir. तो Yes, मेरा sir. इम्प्लीमेंट पार्ट इज रॉन्ग, माई इम्प्लीमेंट पार्ट इज रॉन्ग. Okay, understand that point? Yes, sir. So my implement Yes, sir. part is wrong. So how can I proceed my product? How can I develop my product? How can I launch my product? Okay, sir. Okay. So anyone? So maybe I'm okay. Okay, I'm stop here and moving from the next chapter. This is my stop. This is my slide start. Again, I'm sharing next one thing.
Just 1 minute. Just, yes. Okay, this is the next part, that is the computer software. ओके, डिवाइस के बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़े बहुत पता होगा डिवाइस के बारे में, आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, तो मैं इसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम डायरेक्टली गोइंग मूविंग फ्रॉम द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर कुछ डिवाइस के जरूरत रहेगा तो मैं वहाँ पे भी आप लोगों को डिस्कशन कर दूँगा। इज विजिबल टू ऑल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. so Yes, sir. your computer software. Okay, so in this the computer software, regarding the computer software, we're discussion about what are the major type of computer software, what are the application software, what are the system software. We know that your computer software will be developed, divided into two parts, that is the application and system software. But in my point of view, it is three types. बुक में आप लोगों का रिटर्न है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं आपको शो भी इस तरह से करूंगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट वन पार्ट इज बिहाइंड देम, हिडन प्रॉपर, दैट इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज अ प्रिंटर? एनी आइडिया रिगार्डिंग प्रिंटर? No, sir. प्रिंटर एक्चुअली क्या है, उसमें क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज होता है कि हार्डवेयर यूज होता है? Printer is the hardware, sir, which prints the copy, hard copy. Software is And it required, install, your installation the yes, drive. software is required. Software is required. Device driver software is required to install it. सो इट विल बी गोइंग फॉर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये चला गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सिस्टम में आपको दो चीज चाहिए, ये आपका सिस्टम रहेगा, सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है, हार्डवेयर भी यूज हो रहा है। फाइन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका पूरा सॉफ्टवेयर ही यूज होगा। फाइन। नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है आपका? आप लोगों को पता है कुछ कंपाइलर के बारे में? कंपाइलर सर वो होता है जो जब हम कोडिंग कुछ लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो कंपाइल होता है, वो जो रीड करता है। सिंपल वन, आई एम इधर सिंपल एरिया definition Hardware saying, device. high programming languages, by the use of the प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। compiler, यस सर, it will be converted to machine level languages. एग्जैक्टली सर। Fine. That means whatever I written in any programming language, that is considered as a high level programming language. When I'm using this compiler, it will be equivalent to convert their target program. मतलब आपका वही है, अगर आप सी में कुछ प्रोग्राम लिख रहे हो तो सी का कंपाइलर अलग है, जावा के लिए लिख रहे हो तो जावा के कंपाइलर अलग है, अगर डॉटनेट के लिए लिख लो डॉटनेट का कंपाइलर अलग है। अलग होता है कि नहीं? दैट मीन्स कंपाइलर इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। Java is interpreted now. यस यस यस। हेलो हेलो हेलो। Hello. हाँ, yes, your question is? Java script is an interpreted language, right? Yes, I know. This all the programming languages or scripting languages, they're all different. They're separate how we're compiling. We're using that. So my question is that compiler, what is this compiler? It is a application software or system software? So system software which have to convert the. No. We know that system software means they have some software and hardware, both are using, Yes, sir. like your printer, Yes, sir. But printer is the hardware, no? your scanner also, your scanner also. Okay, sir. But application software, it's only for software. That is your Sir, MS Office, like Microsoft. Photoshop.
Hello. Like Photoshop? Maybe my question is, what is compiler? It is application software or system software? It is the utility software. ये किसी में आपको डिफाइन नहीं किया जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नहीं डिफाइन किया जाएगा, वो हमेशा डिफाइन होगा एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट वहां पे एक हिडन सॉफ्टवेयर रहता है, वो होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसमें आप लोगों का कंपाइलर डिफाइन होता है। फाइन, ये आप लोग याद रख One सकते हो। हाँ, यस। one more example, sir, for utility software. कंपाइलर हो सकता है, और कुछ हो One सकता है, more आप सोच के example. बताओ। आप बताओ। Interpreter, sir. Interpreter also it's a utility software. यस, इंटरप्रेटेड, नो प्रॉब्लम। एनी अदर Interpreter थिंग्स? and compiler are the same things. ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यस, नेक्स्ट। ड्राइवर सॉफ्टवेयर। यस, मे बी। क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप लोग इंस्टॉल नहीं करते हो, वो बाय डिफॉल्ट होता है। आप सोच के थोड़ा सोच सकते हो, कंपाइलर किसी में इंस्टॉल नहीं होता है। इंस्टॉल होता है क्या किसी में? इंटरप्रेटर आप इंस्टॉल करते हो किसी में? हेलो, हेलो। No, sir. No, no, sir. No, sir. दैट इज द की पॉइंट, हम लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं वो सॉफ्टवेयर, वो Sir, बाय it will be डिफॉल्ट inbuilt, inbuilt. I mean, all इनबिल्ट the होता है। hardware that comes pre-installed only, right? We never install that. यस यस, ऑल द हार्डवेयर। Comes pre-installed only. We never install the hardware, correct? It's all fitted in the system and then only we use it. Nowadays all are in the inbuilt। Nowadays Oh. they all are inbuilt। जैसे आप लोग Linux यूज सकते हैं, you are using Linux। If I am Mm-hmm. using Linux, already there are no need for the JDK installation, no need for the compiler, GCC compiler, not no need, it is already inbuilt। Okay. Yes, sir. No need for JDK installation, no need for database like your MySQL, no need for installation process of C++, GCC, all are inbuilt। दैट इज द Mm-hmm. बेस्ट वन। इसलिए तो हम लोग विंडोज नहीं यूज करते हैं, क्योंकि विंडोज इज द लाइसेंस वर्जन, लाइनस इज द योर ओपन सोर्स। Mm, yes, sir. Okay, okay. So it is a computer software as a basically define your application software and system software. And your application software general define is the general purpose programming, all are packaging, library functional packaging, and any specific program like your MS Office, फोटोशॉप के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, एनी विंडो मीडिया प्लेयर। फाइन। And your system management program and system development process, that means your operating system is the best example, that system software. So next will be trends of computer system. We know that this is the generation of computer system: first generation, second generation, third generation, fourth and fifth. Now the generation of artificial intelligence and machine learning। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन हम लोग क्या करते थे, तो इट विल बी यूजर रिटन प्रोग्राम, मशीन लेवल लैंग्वेज हम लोग लिखते थे, दैट इज लाइन। एंड सेकंड जनरेशन में हम पैकेजिंग यूज कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे, फोर्थ जनरेशन में हम लोग डीबीएमएस यूज कर रहे हैं, माइक्रो प्रोग्राम, जैसे हम लोग क्या माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग चिप यूज करते हैं, 806 8086 8085। एंड फिफ्थ जनरेशन में हम लोग नेचुरल लेवल लैंग्वेज, जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से चल रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क, machine learning। This is the high end of the research point, and that never ends, generation of the computer never ends। This is the common goal approach by generalization purpose application, that is the electronic mail, word processing, presentation of graphics, multimedia, personal information manager, groupware। Electronic mail means you are using mail, Rediff mail, Yahoo mail, Gmails। Word processing like you are using MS Office, then you are using MS Word। Notepad भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। Next, presentation of graphics, you are preparing one presentation slide, PowerPoint। Then your multimedia, multimedia like your anyone having an example of multimedia regarding?
Sir, MP4, that's a Basically, multimedia MP4, you MP3. are any high level version of that. You can use in video files. Okay. Yes, sir. Then personal information manager. Any example? Personal information manager. Banking system, any Banking system which system. uses personal information. एनी पर्सनल बैंकिंग सिस्टम आपका जीमेल का हो सकता है भी, क्योंकि वहाँ पे जीमेल आपका पर्सनल डेटा रह रहा है वहाँ Yes, पे, in right? that case सोशल मीडिया for फेसबुक ट्विटर सभी हो गया. सभी हो गया, ट्विटर फेसबुक नहीं कर सकते, कह सकते हो, बट ट्विटर हो सकता है, हम्म. क्योंकि आपको कोई फॉलो कर रहा है वहाँ पे, दैट्स Yes, sir. नेट ग्रुप वेयर, दैट विल बी योर सोशल मीडिया. ग्रुप वेयर मीन्स सोशल मीडिया, दैट इज योर व्हाट्सएप, फेसबुक, एनीथिंग एल्स. फाइन. सॉरी, आई एम रॉन्गली सेइंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर ट्विटर नहीं हो सकता आपका, वो ग्रुप वेयर में जाएगा, ओके ओके क्योंकि ओके ट्वीट सर. आप जो भी ट्वीट करते हो वो आप लोग सभी पढ़ सकते हो, पब्लिक होता है वो. पब्लिक होता है. ठीक है. यस सर. देन वेब ब्राउजर. Sorry to interrupt, sir. Sir, business communication information system both are same. बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम. And sir, this one information system both are same, sir. हाँ Any हाँ, सेम difference? सेम 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 सेम. Okay, sir. क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में, इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट वी आर स्टडी अबाउट देयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हार्डवेयर प्रोडक्ट सम. बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा. Okay, sir. ठीक है. Okay, sir. Thank you. Sir, can you please explain what is the difference of language fifth generation and artificial intelligence? फिफ्थ जनरेशन में आप लोगों का ऑब्जेक्ट मॉड्यूल यूज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे आप लोगों का ऑब्जेक्ट मॉड्यूलाइजेशन लैंग्वेज. जो हम यूज करते थे ना C++ जावा हाँ वगैरह वो हाँ सब हाँ ना? हाँ हाँ, आपका देखो चेक वो करो, सब. सी होता है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड. फाइन. या ऑब्जेक्ट, सी प्लस होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. वहां पे आपका ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है, पर्टिकुलर मेन पॉइंट को ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है, मतलब एंटिटी के हिसाब से आपका डिफाइन होगा. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका हाई हाई लेवल रहेगा, वो आपका न्यूरल नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है. वहां पे आपका वेट फैक्टर रहेगा, वेट फैक्टर के हिसाब से आप लोग इंडेक्स कैलकुलेट करोगे, उस ऑब्जेक्ट अच्छा, व जो एंटिटी का सर कितना जो वेट पाइथन फैक्टर. लैंग्वेज है वो जो वो पाइथन लैंग्वेज हाँ हाँ, वो फिफ्थ जनरेशन में आता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो में? फिफ्थ जनरेशन में नहीं आएगा, वो हाई वर्जन में रहेगा. अच्छा. ठीक. आपका जावा हो सकता है फिफ्थ जनरेशन जावा. फिफ्थ जनरेशन इज ऑल्सो जावा हो सकता है, बट पाइथन नहीं होगा. पाइथन इज हाई वर्जन, क्योंकि मार्केट में अभी पाइथन चल रहा है. प्रीवियस में मार्केट में पाइथन नहीं था, इतना एक्वेंटेड नहीं था, मैंने मार्केट में नहीं आया था. अभी लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स व 4 इयर्स में चल रहा है, लास्ट जितना मुझे याद. माई पॉइंट. फाइन. तो ओके, अभी थैंक यू. डिमांड में है पाइथन, तो अभी डिमांड में है, हेवीली डिमांड में. Sir, what about the Creo? व्हाट अबाउट द Creo, Creo, सॉरी सॉरी सी Creo software, which क्रियो is सॉफ्ट. used in. सॉरी, मुझे उसमें उतना आइडिया नहीं है, वो उसका फुल फॉर्म बता सकते हो क्या? Sir, it is the advance of AutoCAD. हाँ, ऑटो कार्ड. सॉरी, ऑटो कार्ड मेरे एरिया में नहीं है, बेसिकली उसमें भी. Okay, okay. ओके. Sir, in artificial languages, we are using the same languages in advanced version or different language completely. C++ का ये और जावा पूरा का अलग है, advanced पूरा version यूज अलग कर. है, पूरा अलग है, पूरा तो डिफरेंट है. अलग मतलब दो एग्जांपल्स. एग्जाम्पल नहीं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा, आप लोग एल्गोरिदम डेवलप करोगे. अच्छा. उस एल्गोरिदम को डेवलप करने के बाद आप लोग उसके बाद आप यूज कर सकते हो, जावा यूज कर सकते हो. अगर उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप मैंने ऐड करना चाहते हो, सी सी प्लस और प्रोग्रामिंग कोबल लैंग्वेज, कॉटन लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो. बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोल्यूशन ये है कि आपको वो हाई एंड रिसर्च तक जाएगा. जैसे हम लोग उसका लिमिटेशन नहीं है, आप कितने तक जा सकते हो, एक्सटेंड मोर एक्सटेंड ऑफ दैट, क्योंकि वो ये न्यूरल्स के ऊपर कोबल डिफाइन. फटान. सर ये कोबल फटान तो लो लेवल लैंग्वेज हो गया हाँ, वो लो लेवल प्रीवियसली लैंग्वेज यूज. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हाई वर्जन रहेगा. उसके बाद एल्गोरिथम जो भी डिफाइन होगा, उस एल्गोरिथम को अगर आप डेवलप करना चाहते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप डेवलप कर सकते हो, लो लेवल से लेकर डिफाइन कर सकते हो. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
बट अगर मैं लो जनरेशन में जा रहा हूँ, सेकंड थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, वहां पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट नहीं करूंगा, अच्छा। क्योंकि आपका हमेशा जितना हाई वर्जन रहेगा वो लो वर्जन को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकते हो, यूज कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी लेके यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप टूल्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यूआईपी टूल्स इज द बेस्ट थिंग टेस्टिंग केसेस में, जो मेरा एरिया है रिग्रेशन टेस्टिंग का। फाइन, आप क्यूआईपी टूल यूज कर सकते Okay, thank you, sir. हो। ओके, तो दिस इज द वेब ब्राउजिंग स्ट्रक्चर। आप लोगों को भी पता होगा, ईमेल्स, लॉन्च ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। वेब ब्राउजिंग, वी आर यूजिंग दैट वेब ब्राउजिंग, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउजिंग वी आर यूजिंग दैट। सो डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेजेस सिस्टम, ओके। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेजिंग सिस्टम में आपका प्राइमरी टैक्स रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, डेटा इंटरोगेशन रहेगा, डेटा डेवलपमेंट रहेगा। लाइक यू आर क्रिएटिंग डेटा, दैट इज द फील्ड, कैसे फील्ड क्रिएट होता है, एट्रीब्यूट को उसको कैसे डिपेंड करता है, एट्रीब्यूट पे डिपेंड होने के बाद एंटिटी क्या डिफाइन होगा, उस एंटिटी से क्या रिलेशन निकलेगा, उसको आप कैसे ईयर डायग्राम में डेवलपमेंट करोगे, एंटिटी रिलेशन डायग्राम में, उसमें आप लोग कितना प्राइमरी की, आपका कौन सा सुपर की रहेगा, कैंडिडेट की कौन सा होगा, एवरीथिंग यू हैव डेवलप्ड दैट पॉइंट। फाइन। So multimedia technology, this is the multimedia technology, we are know that about every each and every point. Video capturing card, authorization languages, any languages, storyboard, soundboard, MID, these are the number of multimedia technology were available, and more also nowadays, and more also. This is the business enterprise application. We are supporting that business application. That means we are going for the first thing, our enterprise resource, that is the ERP. On the basis of this ERP, we are define three things. What are the three things? Customer relation management, human resource management, and supply chain management. On the basis of that enterprise resource ERP product planning develop होने के बाद, we are decide that what are the customer relation management, वो आपका हर जगह पे आपको मिलेगा, CRP, HRM और आपका SEM आपको हर जगह पे मिलेगा। On the basis of that we develop that your accounting, financial and management system। ये जनरल आपका ई बिजनेस सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रहेगा। फाइन। नेक्स्ट, योर ऑपरेटिंग सिस्टम। Your operating system will be defined, basically we know that user interface. That user interface that assess the number of things, that will be number of tasks to be complete, that is your resource, particular tasks, that is your multi-programming or multi-processing, and file management, and that is the last one, it is the utility. What I'm saying before, utility software, that is the utility and other functionality. This is your user interface that will be using in the operating system. Second thing is the categories of programming languages. That is the machine level languages. This is the high level languages. This is the one of markup languages like your HTML, CSS stack, assembly level languages and machine level languages. Both are similarities. That is the machine level language. That is the binary code languages. That is the 0 and 1. And assembly code languages, that is they are considered about load, add, multiply, supply. We are using these assembly languages. Fine. So we are required an assembler to convert this assembly language to create, convert to this machine level languages. And that is the fourth generation languages. We are using the C programmings, C programmings, Java. We are using that fourth generation programming languages, and that is the object oriented languages. We are defining the fifth generation, where the Java will be developed. And Java will be developed on this object oriented programming. Next, that will be programming languages translator, where I'm discussing already the compiler, interpreter, and assembler. Assembly language to require a assembler to convert this machine level languages. Compiler required for the high level language to low level language or machine level languages. These are the languages we are using for that, converting their corresponding machine level language, because your computer system only understand binary system, that will be 0 and 1. So next, that is the complete of this computer software. So we are basically, we know on this part we are discussing about that computer software, the types of computer software, what are the generation of computer software,
that there will be belongs to that computer software. There will be electronic mail, word processing, presentation graphics, multimedia. These are the system we are facing in the computer system. We are discussing about that. After that, we are discussing about basically that database management part. We are discussing every year diagram, use case diagram, data flow diagram, and your each and every key structure. That is your design structure part. Where design discussion on the next class. Okay. Any doubts? Any doubts? Hello? Hello? No, sir. Okay. So what we have in the next class, sir? Chapter? We are discussing about database management system. Okay. और अदर Okay. नेक्स्ट प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ मे बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर हाउ कैसे सॉफ्ट प्रोसेसिंग होगा मैं आपको मैं बताऊंगा. So सर ये one पीपीटी आप ग्रुप पे डाल देंगे? हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा. ओके सर. मुझे एक दिन टाइम दीजिएगा. वन डे हाँ हाँ मे बी टुमारो आई विल बी ओके मैं सर. ग्रुप नो में. सर इसी ग्रुप में डालेंगे या दूसरा ग्रुप से? सर वो एक ही तो जो ग्रुप है. एक ही ग्रुप है ना आप लोगों का एमएस वो लिखा है एमपीसी जीरो Yes, sir. जीरो Yes, वन sir. एमएस One group. हाँ हाँ वही सर वही. उसी ग्रुप में मैं आई विल अटैच. नहीं, जो लास्ट क्लास जो 4:30 में जो क्लास सर ले रहे थे, हाँ वो हाँ. जो ग्रुप में डाले हैं, हम उस ग्रुप में नहीं है. तो आप जो सर बोल रहे कांटेक्ट थे कर वो जो सकते हो पीके चंपती सर, इग्नो में जो भी है आपके जो भी हैं उसमें आप कांटेक्ट कीजिए. मेरे में मुझे तो जो एक ही पीके चंपती सर बोले कि वो मैं स्लाइड सेंड कर दिया हूँ, पर मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ. सो कौन दो सब शायद दो ग्रुप है, दो ग्रुप है सर. आप थोड़ा कि जाके आपके सेंटर में बात कर लीजिए. क्या sir, आप one भेज thing I दीजिए, would आपके like to नंबर पे bring. व्हाट्सअप कर लेंगे हम. आप पर्सनली सेंड कर देंगे सर. नहीं पर्सनल में सेंड नहीं कर पाऊंगा. आप मुझे वही ग्रुप में आप ऐड हो जाए मुझे इजी होगा. उसमें मैं एक एक करके कितने पर्सनल में सेंड करूं. Sir, one thing I नहीं would सर, like to ग्रुप में bring सेंड. onto your notice, sir. Sir, this is ब्रॉजेस सर ने सर ग्रुप क्रिएट किए हैं. तो आप लोग प्रोजेक्ट से बात सर कर लीजिए बेटर है. सर वन डाउट है सर. डाउट है सर. यस MS-6 यस. का जो पीपीटी था सर वो सर ने किसी दूसरा ग्रुप में सेंड किया. एक्चुअली ये जो ब्रदर सर ने जो ग्रुप किया है, इसमें ओनली 11 मेंबर है. किसी को मालूम है MMPC बेटर रहेगा आप रजिस्टर से बात कर लीजिए. या किसी को मालूम ठीक. है MMPC मैं 01 छोड़ के मैं एमपीसी जो आपका एमएस ग्रुप है उसमें मैं डालूंगा. आपको ऐड कर सेंड करना. ओके थैंक यू. Sir, one thing, sir, one thing, sir. यस. Sir, can you just check out the MMPC-07? There are some addition of the topics because I'm looking out in this MS-06. They're mostly all the this subject is related to this computer software and all this. While this MMPC-07, you will get many things apart from all this MS-07, sir. Introduction to communication, oral communication, written communication. There are a lot of things are added, sir. Can just Okay, no problem. We are discussing next classes. Okay. Okay. We are just discussing about the basic thing. Okay, fine. Okay. Clear. Okay, then. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night. Listen a minute. किसी को मालूम है MMPC 01 छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप है? किसी को मालूम है?